So we start by quickly watching you. हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें, या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Hey, hi guys. Good evening. Thank you for joining in. So we'll be starting today's session now. If you are attending these sessions for the first time, I would like to start with a quick introduction. This is part of Apna Community Exclusives, a webinar series that we have been conducting for the last couple of months, where QFAS has been associated with Apna. So we host regular sessions from 7 p.m. on weekdays and between 3 to 5 p.m. on weekends. We cover a wide variety of subjects like engineering, Gen AI, spoken English, interview prep, upskilling, etc. So the main objective of these events is to help you grow professionally and help in the advancement of your career and get better jobs. So today's session is about drone technology. We have Akshansh here. So Akshansh is a research and development engineer at IdeaForge. He's a research scholar in the field of aerodynamics and flight mechanics. Currently, he's working as a flight performance engineer. So also he has quite good experience with mentoring freshers and working professionals. We're glad to have him with us today. Thank you, Akshansh, for joining us. So before I hand it over to Akshansh, quick, um, uh, okay, uh, is my voice audible? I see in the messages that Akshansh, can you hear me? Yes, Subhash, I can hear you. Okay, cool. Sorry. Yeah. So before I hand it over to Akshansh, anyone has any doubts, please feel free to use the chat box. We also allow you to unmute yourself. So if you have any questions, you can unmute and also ask. तो कभी भी कोई भी वक्त पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए। So without further ado, Akshansh, you can take it over. Sure. So, do I have to switch my camera on as well while speaking? Sure, at least for the initial Okay. some time. Okay, I'll try it for the initial time and then maybe. Yeah, then So, maybe you take. hello everyone. Akshay Desai speaking. Siddharth has given my introduction initially, so I would like to understand. So, being from the drone industry and like working as a research and development engineer in the field of drone, I completely understand the importance of this field and what to say. I am well aware about the developments that are going to happen in this in the coming future. So I would like to understand, like, people there on the other side. Are you guys aware about the drones? And if you are aware about it, have you come on to encounter any one of them? Any one of you? Can you please speak? Am I audible?
Yes, yes, you're audible. Okay, so I would like to expect an answer from you guys. Like, are you well aware about drones, and is anyone using it, or have you seen it anytime, small or big, anything? Anything is fine. Like, just I want to understand, like, are you aware about the topic itself? And if you're not, then I have to just dive deep into it. Guys, Uh, please answer. Uh, uh, this you, is trying to be a monologue. This is you can happening a monologue. also unmute yourself. आप लोग को So बात करने का I am not a teacher for you guys. I won't be judging you or anything. Like, whatever is in your mind, just speak it out. So I'm also not that experienced or that old enough. I'm just 25, 26 years of age. So uh, I would be happy to understand your perspective as well, so that uh, what to say, like, I would try to understand the other dimension as well, like what is what is your perspective in the same, and then try to apply those things into my research. So, like, please speak it up. I would request you guys. Hi, bro. Your voice is breaking, sir. Sorry, Your voice breaking like am I signal is. audible now? Yeah, sir. Literally, I think your voice is breaking, Mahesh. Like, I think your internet is a little bit low. okay, Siddharth, okay, can you okay, hear me okay. properly? Yeah, yeah, I can hear you, Akshay. Mahesh, Okay. yeah, your voice is breaking. So I think it's a problem Okay, on. wait. Yeah. Wait. Yeah, yeah. I will check. Okay, sure. Okay. Yeah, voice clearly, yeah? Yeah, I can hear you clearly now. Yeah. So, Mahesh, have you heard about it anytime? Sorry? Drones. Have you heard about drones anytime before? Yeah. So, what do you know about it? Yeah, I'm actually 2 years experience in Bangalore again for the front end developer. Oh, wonderful. Like, I am also in Bangalore. So, yeah. What do you know about drones? Yeah. Yeah. I just wanted to understand. Yeah. 2 years, 2 years working in Rekin for the front end developing. So after my problem, my family situation dropped this job. Yeah, resigning. Okay. Voice So, clearly, yeah? I still couldn't get the answer. What do you know about drones? Sorry? I still Yeah, couldn't yeah. understand. We'll Like, speak what? little. Hello? Hello? Yes. Yes, Mahesh. So, okay. No problem. So, Uh, anybody else, if you know about anything regarding to drones or something like that? Have you heard about multicopters, quadcopters, fixed wing? Okay. Uh, What else? Like, have you? Means everybody has traveled into an aircraft, so uh, you might have just seen a very big form of flight. So just a concise form or a small form of a aircraft is called a drone. So anything which flies is a aerial vehicle, and UAV is a unmanned aerial vehicle. So, uh, uh, yeah. So anything which flies and it is of a miniature scale is called a drone. So in a very simple and a crude language, it could be said like that. So, uh, yeah. If you guys are not uh, too comfortable in speaking, you can even drop the questions into the chat box as well. So I would take it up from there. Not a problem. Yeah. I would share my screen, and let's see what I have bought for you guys. So is my screen visible? Yes, yes.
Okay, yes, wonderful. So, so yeah, the first question is like, what is a drone? So, uh, what basically is a drone? Drone is relatively a smaller size, remote controlled or automatic pilotless aircraft. So that's what I said. Like it's nothing but aircraft which is of a very small size and it is driven by a remote controlled operation, or it could be by anything else, but the pilot is not sitting into it. So it's a unmanned aerial vehicle. So what are the advantages and disadvantages of it? So um, I won't say it's a cheap and a cost-effective thing. So you could find it at multi-scale level of prices. So it could be of a very costly thing as well. It could be of a very less pricey as well. So it's but yeah, it's very cheap when it is compared with compared anything with in comparison to an aircraft which flies, and it's very costly thing. So if you want to understand the physics of how a aircraft flies, you can understand it by buying a drone. So because the thrust to weight ratio, there is a term called that, so it remains constant both in the drones as well as in the aircraft. So it's a non-dimensional part. It's a ratio that remains constant both in the aircraft as well as in the uh, drones. It's a high spatial resolution. So uh, you would say like the accuracy, the deployment ease, everything is very easy in case of drones, because if you want to uh, fly an aircraft of your own, if you have deep pockets to buy an aircraft, you still have to get a very big size parking lot and a very high level of permissions to just fly it, because you cannot just learn piloting and buy an aircraft and fly it. It doesn't happen like that. Doesn't happen like that. But for the same thing to happen for a miniature size thing, you can buy a drone and you can fly it anytime and anywhere for your contentment, for your happiness, for your learning, anything. So no hindrance from the clouds. If it's a clear environment, you can just fly it uh, with your remote control. Uh, it's a great tool to surveillance. So, why actually did this drone became a very integral part of the of our armed forces as well, or else the police networks as well, because it played a very pivotal role in case of Akash Rajput. I Siddharth, can you hear me? Hello. Yes, yes, we can hear you. You're Okay, audible. okay, okay. So, I don't know, Akash. Please rejoin the session so that if there is a problem, it could be sorted from your end as well. Oh, yeah. So it's a where I was. So I was at the point of surveillance. So it played a very pivotal role uh, in terms of surveillance. So our Indian armed forces, our police service, our big companies, they needed some things apart from camera that could be mobile, that could move from one place to other, and it could surveillance very properly. So the main drawback of a camera is it could be just positioned at a point and it cannot move to different places. But the advantage for the drone is एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. So if you are sitting at a place and you want to surveillance, you put a camera onto your drone and you just send the drone to any place till the point your battery supports it and your range is under the limits. Now the disadvantages are like the limited capabilities and coverages. That's what I was telling. So it's a great tool to surveillance, but it has its own demerits as well. So आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ बैठ के आप अमेरिका में जाके सर्विलेंस कर सकते हो. It cannot happen like that. So it has a limited power plant, it has a limited power source, it has a limited power bank.
So उसी पॉइंट तक वो चल सकता है till the point it is charged, or till the point it is having a fuel to run it, and the coverages are limited for that. So if you want to operate onto a range of 5 kilometers, you want to take a drone which supports 5 kilometers. If you want to take a drone that supports 10 kilometers, then you can surveillance to a part till 10 kilometers, and it's so on. So, and also care is required to use in the populated area. So yeah, that's true. Uh, it's not very easy to operate a drone, because if you're operating at a very uh, populated area, if you're operating at a very populated area, uh, then I don't know, like you have to be a very good pilot to just control it, because anytime when it's a heavy object flying onto your heads, over your heads, so anytime when the control goes, it falls straight away onto your head. So yeah, like it has to be functioned properly to, or programmed properly to make it work. Uh, so yeah, now we come on to the next page. What are the types of drones? So I told you before as well. What are the different types of drones? So, mm, so yeah, it's a multicopter that has many propellers attached to it. It can be a fixed wing, which has wings to fly. So it's similar to an aircraft, but it's a smaller form of aircraft. As I told you, like the range is limited for both of them. So the range is limited for both of them. You cannot just go on flying it. It doesn't happen like that. Now the difference between the multicopters and the fixed wings. Do you have any questions? Speak up, guys. Abhishek, I think there is one question in the chat. Yeah, yeah, I would take it. Yeah, please. Should I read it? No, no, I'll just uh, take it. Yeah. So gyroscope principle used होता है. Gyroscope principle is what is gyroscope? Can you please explain me? Gyroscope पे couple एक होता है. That is called your turn. So I would just try to draw it. या सो देखिए आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में क्या होता है. ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में क्या होता है कि मान लीजिए आप टॉप से देख रहे हैं ना, यू सीइंग फ्रॉम द टॉप, देयर आर 4 व्हील्स. अब जब इसको इट हैज टू टर्न टू अ सर्टेन लोकेशन, हियर और हियर. या प्लीज से somebody has raised his or her hand, so can you please tell. Hello, hello, can you hear me? Okay, I would take it as a yes. So yeah, if a vehicle needs to, turn right, then ठीक है, yes, okay, fine, thank you. If a vehicle needs to turn right, it has to create a gyroscopic couple to turn right, right? So then these wheels have to move fast
and these wheels have to move slow. सबने गाड़ी चलाई होगी, तो जब आपको राइट टर्न करना है, दैट मीन्स आप एक कपल प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें योर आउटबोर्ड व्हील्स आर मूविंग फास्टर and your inboard wheels are moving slower. That would create a couple that will make the vehicle to turn. Similarly, in the case of an aircraft, when you take an aircraft, an aircraft needs to, suppose, an aircraft needs to bank right. So what happens, I will just switch on my camera. When the aircraft needs to bank right, this is called banking. Bank, bank. Suppose the aircraft is moving like this, it banks. So suppose the aircraft needs to turn, then uh, it has to create a couple. Similarly, in the case of an automobile, what happens? Yeah, you can use lithium ion batteries, and it is being used uh, Dakshesh. Yeah, it is being used in the uh, aerospace industries. So, yeah, lithium ion batteries is a very good source that could be used for high battery life. But yeah, it has its limitations. It cannot be just it cannot be just kept on giving the power. So it has to have a limitation, and we have to survive with it. It cannot just move from one place to other. That has a very far distance. It can go to 50 kilometers, 100 kilometers, 150 kilometers, but not more than that. Till this point in time, it could be later on. सर न्यूक्लियर वेस्ट भी तो यूज कर सकते हैं एज अ बैटरी। Sorry. न्यूक्लियर वेस्ट वेस्ट से जो बैटरी बनता है वो भी तो ज्यादा पावरफुल रहता है लिथियम आयरन से। हाँ, लिथियम आयन के कंपैरिजन में मतलब न्यूक्लियर, सो एक्चुअली में क्या है ना, दक्षेश की दक्षेश ही बोल रहे हैं ना? नहीं, चंदन। ओके चंदन, ओके। सो न्यूक्लियर वेस्ट वाला चीज ऐसा है कि uh, एक तो चीज है कि मतलब उसकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो होती है, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. इट कैन नॉट बी जस्ट हैंडल्ड बाय एवरी अदर पर्सन. सो न्यूक्लियर बैटरी बनाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे. इट कैन गिव लिमिटलेस ऑफ पावर्स, but you have to have a very reliable mechanism जो अभी तक कहीं नहीं यूज होता है, बिकॉज उसका एक साइड इफेक्ट है जो बहुत ही प्रोलॉन्गिंग है एनवायरमेंट पे भी और एक ह्यूमन पे भी. सो इट इज नॉट दैट इजी. सो हाँ, वो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग दैट कुड बी. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट. Suraj, just a minute. Shanshi is joining. Sorry for the inconvenience. Yeah, I'm sorry. So yeah, तो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? हैव यू गॉट द क्लैरिटी ऑफ इट? यस इट्स नॉट सम सर। सर जैसे हाँ कि पता है कि चाइना ड्रोन बनाने में नंबर वन मतलब सबसे ज्यादा ड्रोन प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा है एज अ कंट्री, है ना। ओके और ओके रेडार सिस्टम उन लोग का इतना पावरफुल है कि आराम से ड्रोन डिडक्ट पकड़ा जाता है। तो उसके जगह पे कुछ ऐसा टूल या फिर ड्रोन वगैरह जो ये कैच ना हो। हाँ तो मतलब ऐसे आपका एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ऑफ अ ड्रोन। सो स्टेल्थ कैपेबिलिटी क्या होता है कि इट इज सो फास्ट, सो स्विफ्ट एंड सो मतलब वो आपके रडार को भी डिसीव कर देता है। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट अवर डीआरडीओ आल्सो हैज इन इंडिया। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूएस आल्सो यूजेस। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट मेनी कंट्री यूजेस। सो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका जो सोर्स है, न्यूज का सोर्स, दैट इज नॉट, आई वुड नॉट से इट इज कम्प्लीटली 100% करेक्ट कि चाइना ड्रोन बनाने में नंबर वन है। चाइना ड्रोन मैन्युफैक्चर करने में नंबर वन है। सो इट्स लाइक कि वो बहुत जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चर कर देता है। इट्स नॉट कि मतलब उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड उसके ड्रोन्स इतने अच्छे होते हैं कि मतलब रडार सिस्टम में भी नहीं आते। इट्स 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 नॉट सो रिलायबल। क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक टर्की है, लाइक ईरान है, लाइक यूएस है, लाइक इसराइल है। आई वुड से इंडिया भी है, बिकॉज इंडिया में भी आईएसआरओ वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देर आर गुड यस। कंपनीज एज वेल। सो और चाइना के पास एक बेनिफिट ये है कि दे आर मैन्युफैक्चरली वेरी वेरी एफिशिएंट। सो वो जो भी सोचते हैं दे कैन मैन्युफैक्चर इट विद इन आवर्स। सो दैट इज द प्लस पॉइंट विद देम कि आज की डेट में डीजेआई का ड्रोन बहुत ज्यादा बिकता है बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरली वेरी वेरी जायंट। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ देम। आई वोंट से कि इट इज दे आर scientifically or technologically number one in the drone market. But yeah, good Chandan, like you came up with the point. And somebody else, मतलब मेरे को पीपीटी पढ़ना पढ़ना है तो मतलब आई कैन जस्ट रीड थ्रू द पीपीटी, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बजाय कि मतलब आई वुड जस्ट स्पीक आउट द difference between a multi-copter and a fixed wing. It doesn't make any sense to me, as well as I would hope it won't make a sense to you as well. So आपके जो भी यस सर। क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मतलब हमारे इंटरेक्शन इतना फ्रीक्वेंटली तो होगा नहीं, मतलब इफ आई हैव कम ऑन द अदर साइड you can just take the most leverage from me what all informations I can provide you, because I work with the government. So मतलब I can just share you कि मतलब where our country is doing great. I cannot say more than that, but yeah, they are doing very good. So आप पूछिए कुछ भी अगर आपके पास है तो, मतलब नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। सर सर आगे बढ़िए। ओके ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन, सो जो आपके रडार वाला पॉइंट बता रहे थे, सो रडार, सो एक्चुअली आपका जो ड्रोन, द ड्रोन्स आर हियर इन दिस लेवल, the airplane flies at this level and the satellites are at this level. So जो data acquisition होता है that can be done even from the drones, even from the aircraft. So that's the only thing. ये quadcopters है आपका, ये fixed wing है, these all fly and surveillance on a certain part of area and it gives a signal to the satellite and then it is received by a service station. Data acquisition platforms. What are the data acquisition platforms and what are its pros and cons? So satellites, very extensive coverage is there, wide spectral capabilities are there, but its cons are expensive, it's relatively low resolution, and data acquisition bi-weekly or weekly. It's very, very, very slow. Aircraft में क्या होता है? It's large single flight coverage, high resolution and wide spectral capabilities. So बहुत ही high resolution होता है, लार्ज एरिया कवर कर सकता है, बट द कॉन्स आर इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इमेज टाइमिंग कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडर, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोवाइडर, operations are susceptible to the weather.
how to calculate the range. So okay, so आपका रेंज जो होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर पावर प्लांट. सो आपका पावर प्लांट अगर बैटरी है तो बैटरी का आपको एमएएच पता होना चाहिए, जो रेटिंग है बैटरी की. और उसके साथ फिर आप पावर को, जो आपका ड्रोन पावर बना रहा है, उससे आप एक एंड्योरेंस का टर्म निकालते हो. आप एंड्योरेंस का जो टर्म निकालते हो, उसके बाद फिर आपका स्पीड पता होता है. यू नो द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, यू नो द एंड्योरेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, देन यू नीड टू फाइंड द रेंज. सो from there you can find the time of flight. So time is equal to distance upon speed. So distance, distance is what you have to find. The time for flight can be found out from the endurance of the flight. Endurance is कि कितना देर तक flight उड़ेगा, and speed of the flight is the speed by which the flight cruises. So from there you can find the range. Range distance is equal to speed into time. Am I clear? Yes. Okay. Oh, now the second question is, sorry, second question I'm saying. So third is the drone. Drone, the image acquisition on demand. Whenever you want, you can take it. Very high resolution, unaffected by cloud coverage, and cost effective and safe. It has relatively small coverage is the con. Drone regulations can restrict usage. Yeah, that is true. And operations susceptible to weather. This also has a susceptibility to the weather. Surveying. Surveying is having excellent positional accuracy, my friend, and it is very high resolution. But the cons are it is very slow, tedious, and laborious, intensive task. It is very difficult to record on the tops of features. Some sites are inaccessible to the foot. You cannot go to the Himalayas to just take the footage. The next thing is flight time of specific drones. Yeah, so there are different kinds of drones: Solo, Iris, DJI, DJI Phantom 3, DJI Phantom 2, 4, Sensefly, and Cirrus Pro. So yeah, Cirrus Pro and Sensefly are the fixed wings, very big craft, so their flight time are more than 40 minutes. But they are small, relatively miniature size drones, so their flight time are less than 30 minutes. These are the cameras. So cameras and the lidar sensors. So cameras are basically to capture your image processing, and the lidar sensors are to find out lidar क्या करता है कि अगर आपका कुछ obstruction है आपके सामने पहाड़ आ गया, तो lidar sensor आपको बता देगा कि you don't go forward, you go upward because there is a mountain in front. What are thermal sensors? So thermal sensors क्या करता है कि it tells you the heat source. जैसे we are the humans, we also have a thermal image. So thermal image sensors basically gives you the real footage as well as the thick heat source for that. Multispectral cameras. So multispectral cameras give you a wide range of spectral frequencies at which you can just record the image. Yeah, these are the price and the specifications to the model and the brand. Um, yeah. And what is the drone applications? So drone applications क्या क्या है? देखते हैं. So it is very useful for surveillance and mapping. It is very useful for infrastructural planning. It is used in disaster management. So let's deep dive into each one of them. So surveillance and surveying and mapping. So the applications are, it prepares an accurate and a geo-referenced maps, including the base maps. It extracts point clouds and digital surface elevation models. It provides so it's basically the image processing. It prepares and provides contour lines. It makes 3D renderings of the buildings and geographic features. So it's a very interesting thing. Like आजकल मतलब जियो सर्वेइंग से proper 3D buildings भी बनती हैं. मतलब there are a couple of examples in Bangalore as well, where they have made a 3D building. Entire building is of a 3D printed model. Estimation and Yes, curve sir. fill volume. So yeah, that is just there. Now the second thing is the infrastructure planning. So the infrastructure planning is
Uh, yeah, so it is very good in asset mapping and monitoring. It is used in construction management and monitoring. It is used in site analysis, planning and design. It is used in 3D modeling and extraction of the features. Also, I would do one thing. I would just drop this uh, PPT as well in the chat box so that you can just use it. Do you want it or it's okay because it is nothing much different? So if you want it, I can just drop this PPT as well. Okay, I will drop it for a bit of time. Phew, I will drop it just a moment. Now to drop. Uh, can you please tell me how to, because I am not very familiar with Zoom. So, Akshansh, we can maybe address that towards the end of the session. okay, okay, sure, sure. Yeah, right. Okay. So now let's jump back to the presentation. Well, slideshow move. Yeah. Next thing is, uh, yeah, these are the examples. Third one is the disaster management. So yeah, it is a it helps in the pre-disaster management and the risk management techniques. It also helps in the post-disaster management to just like the situational awareness for the emergency response coordination, search and rescue operations, damage mapping for insurance industries for assetting and assessing the insurance claims. Yeah, so that is also case. Mapping and monitoring the extent of disasters. These are the surveying images from the drones. You can see how clear it is. These are the digital surface modeling and the digital terrain modeling. Mm, yeah, please. I would request you guys to do that. Surveying and mapping 3D models for the buildings. You can see this model. This is completely a 3D model technique for the building, and this is completely imaged and surveyed by the drone. This is urban mapping that maps green trees and buildings. So yeah, you can just give different legends to your drone camera, and then you can just wonderfully see the images, and it's magics. Yeah, the drones can do wonders. Like yeah, they are revolutionized. Huh. I would say the not the biggest, but one of the most prominent developments in the 20th century, in the 21st century, is the drones. The pre-disaster and the multi-hazard risk mapping. So yeah, it helps in that as well. Pre-disaster and risk management and the building blocking. The drone, these are nothing but I would not go into it. Like it doesn't make any sense. I would just request you guys to uh, talk to me with the questions. Like please, please, I would welcome the next 20 minutes for the questions. What all questions you have in your mind? Please drain it out and I would be happy to answer it. Please go forward. प्लीज पूछिए सर हम लोगों ने मीटिंग आज क्यों ज्वाइन करी हुई है? क्या ज्वाइन की हुई है? जो अभी मीटिंग हम लोगों की चल रही है, हाँ तो चल रही है। ये किस लिए ज्वाइन किए ज्वाइन हुए हैं अपन इसमें? कैसे
I'll take that up, Akshansh. Okay. I think Suraj, yeah. So Suraj, this is nothing, just nothing in the sense it's Apna's exclusive sessions. Every day we have speakers like Akshansh here who share their experience, their knowledge on different topics. So it's a free webinar for you guys. You can utilize their time. They are spending their time here, like Akshansh said. He has 20 minutes more to spend with you. So every day you can utilize this and you can, take value from their time. So that is why this webinar is there. So Akshash is an expert in drone. So anything related to drone, like he mentioned, UAV. आपको yeah, Yeah. that's it. Like anything related to drones या तो फिर टर्बाइंस के ऊपर हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो गया या फिर बैटरीज के ऊपर हो गया. I would be very happy to answer those kind of questions because I see those kind of things happening around me every day. So uh, it would be really nice to understand like what is the understanding level of all the people who are not from this industry. So like how is your perspective onto it? So like अगर कुछ गलत है कुछ सही है कुछ नया है तो yeah, we can take it and we can just refine it. So I would be very happy to understand like आप क्या सोचते हो ये सारी चीजों के बारे में. So be really happy. जैसे हम आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस भी पढ़ा सकते हैं पर क्या ही मतलब हो जाएगा उसका. देयर विल बी नो यूज ऑफ इट. लाइक आप आज सुनोगे और you will forget it the moment I will just turn off the meeting. So it doesn't make any sense to me as well as to you. So आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछो कि बहुत सारे क्वेश्चंस है यार कि यू कैन आस्क कि मतलब ड्रोन हाउ डज द ड्रोन ऑपरेट एट हायर एल्टीट्यूड्स. ऊपर पहाड़ों में उड़ने से और सी लेवल पे उड़ने से व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो लाइक when you try to fly a drone at a very high altitude, you get to have a lot of challenges. Like you have a temperature challenge, you have an altitude challenge, you have a power challenge, and you have a very limited power plant. So battery goes drain very fastly at lower temperatures. Your operational RPM, if it is a quadcopter or if it is a helicopter, your operational RPM in that case has to be brought टू अ डिफरेंट लेवल. क्योंकि सी लेवल पे डेंसिटी अलग होती है. आपकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऊपर में आपकी डेंसिटी कम होती है तो आपको ज्यादा तेज घुमाना पड़ेगा जिसके चलते टू मैच द सेम थ्रस्ट. क्योंकि आपका अगर क्वाड उड़ रहा है दैट दैट हैज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट और लिफ्ट. So to balance that lift at a higher altitude, you have to just rotate your propellers more faster to get the same amount of thrust because the density goes low. And if you rotate your craft more faster, your power consumption goes higher. So there is a very much of challenge when you fly at higher altitudes. I would tell you my story. I went to a place that was around 5,500 meters above the sea level. It was somewhere uh, around 100 kilometers from Ladakh. So there's a place called Neoma, and from Neoma there is Changla Pass. So at that place we went for testing, and uh, the temperatures are quite extreme. Like it's quite extreme. I am from mountains itself. I am from Uttarakhand, but still I could feel the breeze going into my skin. I was wearing layers,
और फिर उस लेयर्स में आपको ऑपरेट करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द टेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द persons whom you are going to demonstrate. और इट इज अ चैलेंजिंग जॉब मैन, लाइक क्योंकि आपको जो भी टेस्टिंग करनी है, दैट यू डू एट अ सी लेवल, you get different parameters out of that, you got different results out of it, and then you take your drone to a higher altitude, and the story completely changes, because at that point in time आपका डेंसिटी चेंज हो गया, आपका आरपीएम चेंज हो जाएगा, आपका पावर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, आपका पावर प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, आपका सारा कुछ चेंज हो जाएगा, आपका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पूरे ड्रोन का चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक लो टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर्स देयर आर क्वाइट एक्सट्रीम, लाइक दे आर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, जब गर्मी पड़ती रहती है नॉर्थ इंडिया में, दैट टाइम द टेम्परेचर देयर इज -15 -10, सो इट्स क्वाइट एक्सट्रीम। एंड या सो दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर, लाइक आप एक लेमैन इस डोमेन में होने के हिसाब से आप क्वेश्चन पूछो, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर देम। देर आर स्टिल couple of minutes left. I would be very happy to just answer your queries. Please go ahead. Guys, please utilize this time. More than 10 minutes of time left. जैसे कि अक्षांश ने कहा, जो भी सवाल है इन इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द आप पूछ सकते हैं। किसी ने हेलीकॉप्टर देखा है? हेलीकॉप्टर फ्लाई होते हुए, टेक ऑफ करते हुए? इसका तो जवाब बता दो यार, ये तो क्वेश्चन हम ही पूछ रहे हैं। हाँ देखा है ना सर। देखा है ना? तो जी। हेलीकॉप्टर क्या रनवे पे रन करता है फिर उड़ता है, कि क्या करता नहीं, है? वो डायरेक्ट वर्टिकल ऊपर उठता है। राइट, तो वर्टिकल ऊपर कैसे उठता है वो? उसके पास तो विंग्स नहीं होती हैं, फिर कैसे ऊपर उठता है? उसके ऊपर जो उसके पंखे लगे रहते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर, हाँ तो हाँ। वो तो एक्चुअली वही हेलीकॉप्टर तो बर्नौली प्रिंसिपल पे उड़ता है। वो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करता है, जो हम्म। उसके पंखी जो घूमती हैं, तो हाँ वहाँ का प्रेशर वेलोसिटी वहाँ की बढ़ जाती है, तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। हाँ और हेलीकॉप्टर के नीचे का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो प्रेशर हाई हाँ। प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है, तो हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। कौन है ये? क्या नाम है आपका? सूरज। रजत? सूरज। सूरज, बहुत बढ़िया सूरज। तो एक टर्म होता है थ्रस्ट। तो जब हेलीकॉप्टर एयर नीचे पुश करता है, सो इट पुशेस द एयर डाउन, मास फ्लो रेट ज्यादा होता है, उसके चलते एक रिएक्टिव फोर्स आता है, दैट रिएक्टिव फोर्स इज थ्रस्ट। तो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, सो इट राइजेज अप। तो उस समय क्या होता है जब वो उठता है ऊपर, दैट टाइम्स योर थ्रस्ट, जो मास फ्लो रेट के चलते ऊपर आप बता रहे हो कि वो ऊपर पंखे पे एक फोर्स जनरेट होता है, उस वो आपके वेट से ज्यादा हो जाता है। तो आपका वेट जो होता है हेलीकॉप्टर को, उससे बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो वो ऊपर उठने लगता है, समझे? पर जब ये चीज आपका एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन कैसे उड़ता है किसी ने देखा है? मतलब आप लोग बैठे होंगे तो आप लोग रियलाइज किए कि वो पहले रनवे पे रन करता है, इट गेन्स द मोमेंटम। जब मोमेंटम गेन होता है, देन इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस लिफ्ट फ्रॉम द विंग्स, जो बड़े बड़े विंग्स होते हैं उसके। जब वो दौड़ता है रनवे पे, तो जब वो रनवे पे रन करते हैं, दैट टाइम उसका एक एंगल ऑफ अटैक होता है, विंग का एक एंगल पे रहता है विंग। तो वो लिफ्ट बनाता है, फिर वो धीरे धीरे राइज करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब वो राइज करने के समय, उसमें भी वही सेम है हेलीकॉप्टर की तरह, वेट का जो प्रिंसिपल होता है, वेट से ज्यादा आपका लिफ्ट हो जाता है, मतलब वेट के बराबर ही होता है पर वेट से थोड़ा ज्यादा होता है।
तो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट राइज करता है। तो ये दोनों केस है। सिमिलरली आपका जो छोटे ड्रोन्स या यूएवीज में होता है, तो क्वाडकॉप्टर उसी जगह पे उड़ जाते हैं, पर जो फिक्स्ड विंग होते हैं वो रनवे पे दौड़ते हैं या फिर थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ता है। तो जो हाई टेरेन्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशनल एरियाज होते हैं, वहां पास क्या होता है कि जगह, देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस। सो एट दोज प्लेसेस you cannot have the leverage of a complete runway where your aircraft can run and then take off. That is the तो या तो फिर एयरक्राफ्ट बैंक करता है, इट बैंक्स, जो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बोला था कि बैंक करता है, मुड़ता है। तो हेलीकॉप्टर क्या करता है, हेलीकॉप्टर बैंक नहीं करता है, हेलीकॉप्टर पिरूवेट करता है, उस जगह पे खड़ा रहता है और वो घूम जाता है, क्योंकि उसके पास एक लंबी सी टेल रहती है। टेल अपना आरपीएम तेज करती है और एक साइड का मोमेंट बनाती है और वो घूम जाता है, क्योंकि मूवमेंट आर्म से सीजी का डिस्टेंस आपका एक फोर्स इनटू डिस्टेंस को कपल बनाता है, जो आपका हेलीकॉप्टर को पिरूवेट कर देता है, पूरा घूम जाता है हेलीकॉप्टर। अब जैसे हम आपको बता रहे कि आपका जैसे समझ जाइए कि ये एक हेलीकॉप्टर है और इसमें ये पंखे लगे हुए हैं, ये पंखा लगा है ऐसे। तो और पीछे में टेल है, ये टेल है। तो अब क्या है कि जब when this tail RPM goes higher, it creates a force, lateral force into displacement from the CG that creates a pivot moment। तो वो हेलीकॉप्टर उसी जगह पे मुड़ जाता है। बट एयरक्राफ्ट को क्या करना पड़ता है, एयरक्राफ्ट को घूमना पड़ता है ऐसे, तो वो घूमता है, ऐसे घूमना पड़ता है। तो that is a challenge, and that is a very interesting thing why helicopters win at higher altitudes, because helicopters के पास वो एक लेवरेज रहता है कि वो आ, बड़े अच्छे तरीके से मतलब हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करते हैं, और बहुत मजा आता है उनको देख के। मतलब मेरे मेरे तो फेवरेट हैं हेलीकॉप्टर्स एरियल व्हीकल्स में। मतलब आ, सब लोगों को फिक्स विंग बहुत क्लासी लगता है, पर मेरे को हेलीकॉप्टर बहुत, इतना कॉम्प्लेक्स मशीन होता है मतलब, और कमाल की चीज है। मतलब आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में, मतलब इट्स वेरी नाइस मतलब। और उसकी फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मतलब हेलीकॉप्टर्स की फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फिक्स विंग की फिजिक्स ये है कि आप मतलब एयरक्राफ्ट को अगर एक बार पढ़ लिए, उसी तरीके फिजिक्स आपकी हर एयरक्राफ्ट में लागू होती है। बट हेलीकॉप्टर्स में आपका ट्विन रोटर है, दो रोटर है, टैंडम है तो अलग है, दो रोटर अलग अलग एल्टीट्यूड पे है तो अलग है, मतलब चिनूक मॉडल है तो अलग है, आपके सेम प्लेन में है तो अलग है, एक रोटर है तो अलग है। सबकी फिजिक्स बहुत अलग है, और कमाल की चीज है मतलब। उसका जो टर्न होता है, पिरूएट होता है, दोज थिंग्स आर क्लासिक मतलब। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, आप लोग क्वेश्चन और कुछ पूछिए अगर है तो, प्लीज आस्क। Guys, any questions, anything? You have a few more minutes. Please utilize this. I think there is one question from Akash. ओके, एक्सप्लेन टाइप ऑफ ड्रोन। तो आकाश, वही हमने बोला था कि बहुत अलग अलग तरह के ड्रोन है, वही बता रहे थे आपको कि मल्टी कॉप्टर्स होते हैं, टैंडम होता है, चिनूक होता है, चिनूक मॉडल होते हैं, फिर आपका फिक्स्ड विंग होता है, बाई प्लेन होता है। तो अगर आपके दो विंग हो गए तो वो बाई प्लेन हो गया, दो विंग एक स्टैगर पे हो गए तो वो एक टैंडम विंग हो गया। जब विंग हटा के आप रोटर लगा लो, एक रोटर हुआ तो हेलीकॉप्टर हो गया, दो रोटर हुए तो टैंडम हो गया, चार रोटर हुए तो क्वाडकॉप्टर हो गया, आठ रोटर हुए तो ऑक्टो ऑक्टाकॉप्टर हो गया, छह रोटर हुए तो हेलीकॉप्टर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है। फिर आपका मिनिएचर ड्रोन हो गया, मिनिएचर ड्रोन में क्या हो गया कि आपके मिनिएचर एफपीवीज हो गए। तो अलग अलग तरीके की चीजें, पर प्राइमरीली आप फिक्स्ड विंग और मल्टी कॉप्टर्स में उसको बाइफरकेट करते हो। मल्टी कॉप्टर्स में आपका एक रोटर, दो रोटर, चार रोटर, आठ रोटर, छह रोटर सब आते हैं। फिक्स्ड विंग में आपका मोनो विंग, बाई प्लेन, टैंडम विंग,
ट्राई विंग सब आते हैं। ठीक है, तो यही था। क्लियर? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जीपीएस कैसे इंटीग्रेट करते हैं ड्रोन में? ओके, जीपीएस होता क्या है? जीपीएस क्या बताता है? आपका एयरक्राफ्ट का पोजीशनिंग बताता है। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशनिंग क्या है, राइट? लोकेशन एंड पोजीशन, राइट। तो जो आपका ड्रोन है उसका एक हेड होगा, एक टेल होगा। उसके हेड को फेस करते हुए आप अपने जीपीएस को हमेशा लगाते हो। जैसे अगर एक फिक्स विंग है तो उसके नोज की तरफ पोजीशन करते हुए एक उसके जीपीएस को लगाते हैं। अब उसके बाद जीपीएस के वायर्स जो होते हैं, आप मतलब वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, पर उनके वायर्स आते हैं ऑटो पायलट में। एंड ऑटो पायलट का जो कंट्रोलर होता है वो आपका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में आपके जीपीएस का हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। जब आप जीपीएस को कैलिब्रेट करते हो, उसको एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्स जी एक्सिस में, तीनों में घुमा के एक बार कैलिब्रेट करते हो उसको। फिर उसके बाद ड्रोन को रखते हो आप हेड पोजीशन की तरफ, उसको फेस करके। उसके बाद फिर यू गेट द सिग्नल्स ऑन टू योर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन कि योर जीपीएस इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आपको पता चल गया कि उसका नॉर्थ ये है, एंड यू गेट अ रिलेटेबल coordinate system with respect to the global coordinate system of the GPS and the Earth. अब आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से आप फ्लाई करते हो, तो दैट डिटेलिंग इज बीइंग गिवन एंड रिफ्लेक्टेड व्हेन योर क्राफ्ट फ्लाइज। योर हेडिंग एंड पोजिशनिंग of the entire craft with respect to the global coordinate system is being reflected onto your ground control station. ये होता है। क्लियर? Yeah. हेलो हेलो Yes. Yes, ओके, Akash. रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था कि ओला का जो कि गूगल का मैप यूज कर रहे थे। हेलो you are not audible. Yeah. हेलो हेलो Your voice is very low, Akash. हेलो Yeah, आप you लिख दो can. आकाश, Yeah, you yeah. can write it. मैं ये कह रहा था कि जैसे गूगल मैप होता है जो जीपीएस जो अमेरिका का बनाया हुआ है, तो जो भी ड्रोन जो चलते हैं, क्या उसकी लोकेशन जीपीएस जो गूगल का है वो स्टोर करता है डेटा पूरा? He's asking like way drones use Google Maps and all. So does Google have the permission to store the data? नहीं नहीं नहीं, सो इट कुड बी लाइक आप अपना खुद का, जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो मतलब एक ऑटो पायलट होता है। ऑटो पायलट में खुद ही देयर इज अ प्रोविजन टू स्टोर योर जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, योर एंटायर लॉग फाइल। तो उसमें से फिर यू कैन जस्ट गेट द हेडिंग। एंड कंपनीज आर देयर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, दे हैव देयर ओन जीपीएस ट्रैकिंग एप्लीकेशन जिसमें उनका खुद का मैपिंग सिस्टम है। And they use that. They do not use Google Maps because Google Maps is something that is open source, and it can be easily hacked. Not hacked, I would say. I would say it could be easily intercepted. But if you have your own local system network, then that won't make any change. So yeah, that's it from my side, I would say. Uh,
Anything else if you want to ask, you can just please go ahead. Otherwise, we can just close the session, right, Siddharth? Yeah, so with that, we'll just quickly conclude. So thank you guys. We've come to the end of today's session. Thank you so much, Akshansh, for joining us today and for sharing your Thank you, expertise with Siddharth. us. It's my pleasure. I believe most of the questions and doubts we addressed. So thank you everyone for joining in and making this a successful session. Just a quick reminder, I dropped the feedback form couple of times. Please do fill it out. It helps us in improving and delivering better quality. You can also check upcoming events in the Apna website, Apna Exclusives website. You can also register for upcoming engagements. As mentioned earlier, we'll keep having sessions like these every day. We hope to see you all tomorrow. Good night and thank you again, Akshansh. Thank you, everyone. You have been a lovely audience. Thank you so much. Thank you, Siddharth.